So today's our topic is cloning. Cloning. So what is exactly called cloning? Cloning means creating the duplicate copy or identical copy of the production database is called clone. Clone means creating, for example, this is my source system. Source system means this is my box Linux server where I have the operating system, that is for example Oracle Enterprise Linux. On the top of that I have installed the Oracle RDBMS software, that is for an example 11G release to patch set for Oracle software. Then I have created a database. Now I want to implement new, for example now I want to enhance the new features, means I want to new features I want to implement, or I need to apply some database patches, or I need to change some parameters, for example SGSIs or PGSIs, something, anything related to performance or related to new enhancements related to security. You want to implement some new changes on the production, but in real time before going to make any changes in the production you have to take the approvals. Okay, you have to take the approval from the client. So client will give you the approval on what basis? So first client is going to ask you, have you tested this new enhancement on the clone? If you are going to say yes, he will ask you the test cases, that screenshots whichever you have implemented in the clone. If you are going to show that screenshot, that evidence, then only client will give you the approval to implement the new enhancements, new changes, new patches on the production. So before going to make any changes on the production, you have to clone the production into the different servers. You have to create the duplicate copy of the clone into the different servers with the help of Rman. Then you have to implement the new enhancements over there. If everything goes fine, then only we are going to apply those new changes into the production. समझे ना? अब जैसे कि देखो मैं प्रीवियसली मैं कॉग्निजेंट कंपनी में काम कर रहा था. ओके, थ्रू कॉग्निजेंट आई यूज्ड टू वर्क in the HDFC Bank. Okay, so in the HDFC Bank we used to have one team. We used to have one team. That team name is TSG. That team name is TSG. See here, the team name is TSG, means which stands for Technology Support Group. What is the work of this TSG team is that they have to come up with new features. They have to come up with new enhancements. Okay, at least every quarterly they has to come up with at least with one or two new enhancements. Okay, new enhancements बोले तो new changes. वो new changes के वजह से end users को, बैंक के end users को बहुत सारे फायदे होना चाहिए. इस तरह के न्यू एनहांसमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को लेके आना. फर्स्ट सोचना, कॉन्सेप्ट क्रिएटिविटी मींस फर्स्ट सोचना, अगर से ये इस तरह से मैं चेंज करूंगा तो एंड यूजर को इस तरह से फायदा होता होगा. बाद में वो कॉन्सेप्ट को लेके आके बीएसजी टीम बोले तो बिजनेस सपोर्ट ग्रुप, ये लोग क्या करते हैं, एंड यूजर से कोऑर्डिनेट टच में रहते हैं लोग हमेशा. ये फर्स्ट डीएसजी टीम क्या है, नए कॉन्सेप्ट्स लेके आना. ओके, लाके इनको प्रोजेक्ट करना बीएसजी टीम को. बीएसजी टीम क्या है, अरे ये तो चिल्लर कॉन्सेप्ट है, ये नहीं, जरूरत नहीं है, रिजेक्टेड बोल देते नहीं, अरे ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, चलो ये कॉन्सेप्ट ओके है बोल के अप्रूवल देते बीएसजी टीम. जो कॉन्सेप्ट आप लेके आना एकदम एक्सलेंट कॉन्सेप्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करो. लेकिन जब टीएसजी टीम को अप्रूवल मिल गया बीएसजी टीम से, वो नया कॉन्सेप्ट अच्छा है, कंपनी को उससे फायदा मिलेगा और एंड यूजर्स का जॉब वो ये न्यू एनहांसमेंट्स से इजी हो जाएगा बोल के, उस टाइम में क्या करते हैं टीएसजी टीम, वो नए चेंज को, अब तक क्या था, वो खाली एक प्लान था, वो मीन्स प्रोजेक्टर में डॉक्यूमेंटेड तक ही था. अब उसको बनाना है तो क्या है, बनाते हैं लोग. एक्चुअली टीएसजी टीम क्या है, ये डेवलपर्स रहते हैं, एक्सपर्ट्स रहते हैं ना पूरे. ओके, अब उसको डेवलप करके टेस्ट करना. अब टेस्ट करने के लिए उनको क्या होना, प्रोडक्शन होना. तो एज ए डीबीए मैं कभी भी मेरा प्रोडक्शन डेटाबेस डायरेक्टली टीएसजी टीम को कभी नहीं देता हूँ. ओके, अगर से टीएसजी टीम के पास वैलिड डॉक्यूमेंट भी है तो मैं क्या करता हूँ, एक नया सर्वर ले लेता हूँ. ओके, वो
नए सर्वर में क्या करता हूँ, ये डेटाबेस को क्लोन कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ आर्मन। क्या करता हूँ मैं, ये नए डेटाबेस को इसमें को क्लोन कर लेता हूँ। बोले तो इसका डुप्लीकेट कॉपी बनाता हूँ मैं इधर। डुप्लीकेट कॉपी बोले तो ये जैसा है डेटाबेस उसी तरह से सिमिलर कॉपी, आइडेंटिकल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी विद द हेल्प ऑफ आर्मन। सो आर्मन can create the duplicate copy of any production database. Okay, तो ये प्रोडक्शन डेटाबेस का डुप्लीकेट कॉपी बना के मैं टीएसजी टीम को हैंड ओवर करता हूँ। तो ये टीएसजी टीम क्या करेगा, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा न्यू चेंजेस बना के, वो नए चेंजेस को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा। इम्प्लीमेंट करके वो नए चेंजेस को क्या है, थोड़े स्पेसिफिक एंड यूजर्स को देते टेस्टिंग के लिए। वो एंड यूजर्स उसको टेस्ट करते, टेस्ट करके अरे ये एक्सेलेंट है, इससे हमको बहुत फायदा हुआ, हमारा प्रीवियस जॉब इतना टाइम लग रहा था तो ये एनहांसमेंट से इतना टाइम लग गया। इससे पहले क्या था, हमको पैसा जब भी ट्रांसफर कर पैसा निकालना था तो मशीन को जाना पड़ता था, अब क्या है घर बैठे हम ट्रांसफर कर दे सकते। ऐसा ये नए चेंज से हमको ये फायदा हो रहा, सही है बोले तो। जब भी जाके हम लोग प्रोडक्शन पे इम्प्लीमेंट करते, हम नहीं ये टीएसजी टीम ही जाके प्रोडक्शन पे इम्प्लीमेंट कर दी। लेकिन कभी भी नए चेंजेस प्रोडक्शन पे हम कभी भी इम्प्लीमेंट करने नहीं देते किसी भी टीम को। फर्स्ट नया चेंजेस क्या है, कभी भी डुप्लीकेट कॉपीज प्रोडक्शन के पे इम्प्लीमेंट करना, उसको टेस्ट करना। इफ एवरीथिंग गोस फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू चेंजेस दे आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स, okay, business benefits, then only those new changes will be going to implement on the production. ऐसा नहीं कि आप देखो प्रोडक्शन पे एक नई डायरेक्टरी बनाने के लिए भी आपको अप्रूवल्स लगते हैं, MKDR बोलते हैं। नई डायरेक्टरी बनाने के लिए भी प्रोडक्शंस पे आपको परमिशंस लगते हैं। अब जैसा कि देखो मैं, अब जैसा मैं HDFC बैंक में काम करा ना, एवरी 3 मंथ्स को एक नए कंपनीज वाले ऑडिट को आते। प्रोडक्शन डेटाबेस में कुछ भी डायरेक्टरी भी पूछे, ये डायरेक्टरी किस लिए बने, कौन बने, कब बने, एज ए DBA मुझे आंसर करना पड़ता। अब ये पैरामीटर SGA का सही जब हम लास्ट टाइम देखे थे तो इतना था, अब इतना इंक्रीज करे तो किसके रिकमेंडेशन से करे, क्यों करे, अब कुछ तो रीजन हुआ होगा तो हम लोग इंक्रीज करे होंगे। लेकिन आंसर देना पड़ता, हाँ उस टाइम में ऐसा इश्यू आया था तो हम लोग SR रेस करे थे, SR इंजीनियर सजेस्ट करा तो हम लोग इंक्रीज करे। कहाँ है वो एक्शन प्लान में, SR इंजीनियर आपको सजेस्ट करा हो, बताओ तो बताना। बोले तो हर एक चीज, ओके, इवन एक डायरेक्टरी बना हुआ है भी है प्रोडक्शन सर्वर में तो DBA रिस्पॉन्सिबल है। क्यों बने थे, किस लिए बने थे, किसके कहने पे बनाए हुए थे। तो हर एक चीज का तो प्रोडक्शन इतना क्रिटिकल रहता, ऐसा नहीं कि कभी भी गए कुछ भी बना दिए, कुछ भी रिमूव कर दिए, कुछ भी डिलीट कर दिया, ऐसा नहीं रहता। प्रोडक्शन का जब भी एक्सेस भी ले रहे हैं तो वो भी रिकॉर्ड होता, कौन लिया था, कितनी देर के लिए लिया था, कब हुआ था, कौन कब लिया था वो। तो इतना स्ट्रिक्ट रहता प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में कुछ भी न्यू एनहेंसमेंट इम्प्लीमेंट करना तो फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, क्लोन पे इम्प्लीमेंट करते करके टेस्ट केसेस लेते उसके। बोले तो ये नए चेंजेस के बाद प्रोडक्शन पे परफॉर्मेंस बढ़ा, ओके, फायदा हुआ, इससे ये कंपनी को ये फायदे होने वाले हैं ये न्यू चेंजेस के थ्रू बोल के, जब भी जाके वो न्यू चेंजेस प्रोडक्शन पे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, ये जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा इधर लिखा हुआ हूँ। और समझो कि अब ये प्रोडक्शन ऑलरेडी मैं बना दिया सो, फॉर एग्जांपल आज बनाया मैं, आज मीन्स 26 जून 2022, ओके फॉर एग्जांपल। अब सपोज समझो कि 2-3 महीनों के बाद अब ये टीएचजी टीम ने बोली कि टीएचजी टीम न्यू एनहेंसमेंट्स के साथ है फिर से आफ्टर 3 months, so the same data, same this clone database I will be not going to give them, so I have to, as a DBA, I have to delete them, I have to delete this database, I have to drop this database. After dropping this database, I have to clone it. Again, I have to clone it. First, I have to drop it. After dropping, with the help of Rman, I will be clone it. So always we have to give to this testing team, development team, latest clone of the production database. Okay. So let me show you how to create the duplicate copy or identical copy of the production database with the help of Rman. Okay, we have two types of the clones is there. Okay, offline cloning as well as online cloning. Okay, so I will be going to show you the online cloning. Okay, production I will never for production we can't take the downtime, okay, because it's a production. So always in real time also we are going to get the opportunity, we are going to get the
approval to make the online cloning only. So I will, in this session, I will be going to show you how to clone from the production through Rman, okay, using online cloning. So this is my production database. So first let's make sure that your production database is running with archive log mode. So this is my production database. Select name, status from $instance $database. So it is my production database and it is in open state. So is it running in archive log mode or not? I have to check it. So it was running with the archive log mode. Okay. So archive log mode. So archive log mode now. So where is the archive logs is generating? Use underscore db underscore recovery underscore file underscore desk. That means it is archive logs are generating under FRA. For example, FRA. Okay. So for example, in case if you want to change the archive log location, so how is it possible? Let me show you. Okay. In that case, you have to okay, let it be otherwise in FRA itself. That is the best. Okay, we have to store the archive logs in the FRA. So anyhow, FRA is also running. So okay, now I will be going to start the clone. So let's open a new terminal. Let's connect to Oracle user. So what name would you like to give for the cloning? For example, I want to give the name as a clone. So mkdir clone. Let's create one directory. Okay. Now go to the Oracle home /dbs. Okay. For clone database, you have to create the p file now. P file manually you have to create. So what I will be doing here. So show, now I came to the production. Now check show parameter sp file. So my production database is running with sp file. So I will be creating one p file. Create p file from sp file. Now come to the clone database. So here, see here, this is the p file. This is the p file of the production database. With the help of this p file, I will be creating the new p file for the clone database. cp-rdf init prod.ora to init clone.ora. Now open this vi init clone.ora. So here, come down. Let's keep your cursor here. Where? Under this parameter, that is audit underscore trial is equals to db. Let's keep your cursor here. Then press dgg. Means I want to remove this parameter. So let's keep your cursor here. I want to remove this parameter as well as all the above parameters. So for that, the command is dgg. Then what I have to do it. So this is the FRA related parameters. So let's remove this FRA related parameter. I don't want this FRA in the clone database. db recovery file desk size, db recovery underscore file desk. That means this is related to FRA. So I will be removing these parameters. This dispatches parameter I have to remove in the clone database. Then this remote login password file parameter I have to remove. So rest here under control underscore files. So where do you want the control files for the clone database? I want the control files for the clone database under clone directory. So instead of prod, change it to clone. And how many control files you required for the clone database? Then database name here you have to change from prod to clone. So that's enough. Okay. Now save and quit. Save and quit. Now if parameter file is ready, obviously you can go up to no mode stage. So let's export it. Export Oracle underscore SID is equals to clone. Then SQL plus / as sysdba.
then startup no mount. Okay, so this clone database I have started in no mount stage. Okay, so all these steps, practical steps I have mentioned here under cloning handout. See here. So this remote underscore login underscore password file, you have to remove this line. Dispatches line you have to remove. Okay. Keep the cursor here, audit underscore trial is equals to db, including this parameter as well as all the above parameters you have to remove it. Okay. Then here you have to add two new cloning related parameters. You have to add two new cloning related parameters. DB and DB file name convert. The parameter name is DB underscore file underscore DB file name convert is equals to the production data files location. So my production data files are under this location. Then where do you want to create the data files for clone database? Under u01 slash home slash clone. So similar for redo log files, that is log file name convert, log underscore file underscore name underscore convert. So where is your production redo log files location? 01 home clone. Okay, now save and quit. Okay, to get it effect. Okay, so I will be giving startup no mount force. Then I have to create a listener. I have to create a listener for clone database. So how to create a listener? The help of netmgr command. So assign listeners, then arrange plus sign. So it's up to you. You can give any name for listener. I will be going to give list underscore clone. Okay, then add. So here you have to give add address. So this is a machine name and port number you have to give. Any 4 digits unique port number you have to give. Then database services, add database. So here clone. Go to the file, then save it, close, come to the first terminal. Okay, from clone database to come to the production database, and with the help of netmgr create one TNS service.
DNS service. So expand here, click service naming plus sign. So I will be going to give here to clone. Next. What is the listener's machine name? Let me start the listener here. So linex.dba.com. Linex.dba.com. The code number I have given 2233. Next, here I have to give clone. Next, finish, file, save, close. Let's check DNS pin to clone. So after that, make sure you have the password file for the clone database. So come to this terminal, the clone terminal. From the DBS location, create the password file for the clone database. How to create? Aura pwd file is equals to aura pw clone, password is equals to manager, force is equals to y, ignore case is equals to y. Okay, so after that, come to the first terminal, that is production database. After coming to here, so you have to give like this: Rman target slash no catalog auxiliary. Auxiliary means for this clone database. For this clone database, in the Rman terminology, we used to call it as a auxiliary database. For this clone database, okay. So we have to give here auxiliary. So under auxiliary database, sysuser slash sysuser's password @2 clone. That means here, so you have to get the message like this: production database Rman has connected to target database, that is prod, as well as connected to auxiliary database clone with the help of this DNS service. Okay, now I will be going to give duplicate target database to clone from active database. So this active database feature was came in 11G. Okay, so before 11G it is not there. Before 11G, in 10G, what we used to do, we used to take the latest backup of the production database. With the help of backup pieces, we used to create the clone. From 11G, Oracle introduced these new features. Okay, instead of taking backups, with the help of creating the clone with the help of backups, okay, directly, okay, we can say to Rman that duplicate target database to clone means here target means what is your target database here? Target means prod. So with the help of prod database, I will be instructing to Rman that go and connect to the production database prod, okay, and create the similar copy of the production database and name it as a clone. Okay, so here let's give enter. So let's do, okay.
ये क्या हो रहा है आपको, आपका जो प्रोडक्शन का आर्मेन जो है ना डेटा फाइल्स को रीड कर रहा, तो उसके अंदर अब एक एक सिस्टम एक एक डेटा फाइल के अंदर क्या डेटा है, कितने टेबल से कितने यूजर से इंफॉर्मेशन लेता, लेके क्लोन डायरेक्टरी के अंदर जाके नए डेटा फाइल सिमिलर डेटा के साथ सिमिलर नेम्स के साथ से बना देता। और रीडू लॉग फाइल्स को भी, कंट्रोल फाइल को भी बना के क्या आता, फर्स्ट कंट्रोल फाइल बनाता, देखो ऑलरेडी कंट्रोल फाइल बन गई इधर, स्क्रॉल अप करो, कंट्रोल फाइल बन गई इधर, देखिए इधर क्लोन डायरेक्टरी के अंदर एक कंट्रोल फाइल और दो कंट्रोल फाइल, अब जितने पैरामीटर फाइल के अंदर रखे उतने कंट्रोल फाइल्स बना लिया। और इसके बाद क्या है, अब डेटा फाइल्स बना रहा, डेटा फाइल्स के बाद रीडू लॉग फाइल्स बना रहा। 11G की फ्यूचर है एक्टिव, एक्टिव डेटाबेस क्लोनिंग बोलते हैं इसको। क्लोनिंग करने हार्डली एक 10 या 15 मिनट ही लगते हैं। क्लोन हो जाने के बाद ये जो आउटपुट आ रहा ना, उसको पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ो, इससे आपको ये मालूम होगा कि आर्मेन कर रहा तो आर्मेन, लेकिन आर्मेन कर कैसा रहा है, क्या चीजों का हेल्प ले रहा आर्मेन, फर्स्ट किस किस को रीड कर रहा, किसके थ्रू बना रहा उन्हें डुप्लीकेट कॉपी प्रोडक्शन का, ये पूरा आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। सो ऑलवेज यू हैव टू गो थ्रू दिस आउटपुट। So here it will be hardly it will be going to take me 20 to 25 minutes, because my production database size itself is 1 GB or hardly 1.5 GB. Okay, so in real time, if the same command I will be going to run, this duplicate command, it will be going to run for 6 to 7 hours, because the size of the production database in real time will be like this 2 TB, 3 TB, 5 TB, 15 TB, 20 TB, like that. Okay, so in the real time, this duplicate command will be going to run for 4 to 5 hours. So yeah, actually it depends on database size. Okay. So first data file got copied. If you want to see, let's go to the third terminal, that is a clone terminal. Okay, go to this clone directory. Now see here, ls. See here. Now right now you have two data files. When you go to the next data file, you will get the third data file over there. Okay, right now it has cloned only two data files. Still you have more 3 to 4 data files are there. Now it went for third data file, that is undo. So go and check here under clone directly. So yeah, undo, you got it. Still you got 3 data files, 2 control files. So still you have more data files are there. Now second undo table space. Now go and check there. So yeah, second undo table space and tz data file.
Oracle instance started means clone database it started also, as well as connected to auxiliary database. Auxiliary database means it's clone database. That is clone database. Temporary table space. Alter clone database open reset logs means it is opening a clone database with reset logs, so that reset id should get changed because it is a duplicate copy. Okay, duplicate copy means the reset id will remain same, so that's the reason it will be opening in a reset log mode, so that reset id will get it changed, as well as dbid also it will be going to change. Rman will change it. Now see here, database open. Which database is open? Clone database. Finish duplication. Duplicate. Now go and connect to the SQL prompt here. SQL plus /sysdba. Now select name comma status from v dollar instance comma v dollar database. See here, your clone database is in which state? Open state. In which state? It is open state. Before cloning, I have kept it in which state? Let's see here, startup no mount, because I have parameter file, so I can go up to no mount. I can't go for mount stage. For mount stage, control files is required. I can't go to open stage because for open stage data table spaces and redo log files is there. Okay, but parameter file you have to create it manually. Okay, so rest all Rman can take care. So this is the cloning.